We're live from New Delhi. You're watching DD India News, India's voice to the world. I'm Lipakshi Khurana. Coming up in the next hour. US President Trump warns Hamas to release hostages or face destruction as the White House holds unprecedented secret talks for Gaza hostages. Piling pressure on Ukraine's Zelensky for peace deal, US cuts intelligence sharing for Kyiv. EU leaders set to meet for a special summit on defense in Ukraine on Thursday. Ukraine's President Zelensky also invited. India's External Affairs Minister Dr. Jaishankar reaffirms India's stance on Kashmir, calls for return of stolen part from Pakistan. And in sports, New Zealand outclassed South Africa in Champions Trophy semi-final to set up summit clash against India on Sunday. And on to the details now. US President Donald Trump has issued a stern ultimatum to Hamas leaders, warning of further destruction in Gaza if all remaining hostages are not released immediately. In a statement on his Truth Social platform, Trump threatened repercussions for Gaza's population, which has been largely displaced by Israel's military campaign. This comes as a ceasefire teeters, with Israel seeking to extend the first phase until mid-April and Hamas pushing for a transition to the second phase, which would lead to a permanent end to the war. France, Britain and Germany have condemned the humanitarian situation in Gaza as catastrophic, urging Israel to ensure the delivery of aid. The US has also confirmed direct talks with Hamas, with the US envoy on hostage affairs discussing American hostages. Trump's proposal to take over the Gaza Strip has been met with widespread condemnation, while Arab leaders have proposed an alternative plan to finance Gaza's reconstruction through a trust fund. And European nations have unequivocally stated that Hamas must be stripped of its governing role in the Gaza Strip. This declaration came after a UN Security Council meeting where Arab countries' plan to rebuild Gaza was discussed. The plan is seen as a counter to US President Donald Trump's proposal for US control and resettlement of Gaza's residents. French diplomat Jade Dharamadhikari emphasized that any future plan must ensure Israel's security, prevent Palestinian displacement and support unity under the Palestinian Authority. Well, the European nations have expressed support for these plans, with Dharmadhikari urging Israel to allow massive humanitarian aid deliveries, citing this as non-negotiable. Israel has blocked aid deliveries until Hamas accepts its truce terms. And as Egypt unveiled the Gaza reconstruction plan on Tuesday while hosting an Arab League summit in Cairo, Israel and the US rejected the proposal, while the Palestinian militant group Hamas welcomed it. Hamas, in a statement, welcomed the Arab proposal to rebuild the Gaza Strip under a future Palestinian Authority administration, while the Trump administration rejected the plan, claiming that it does not address the reality that Gaza is currently inhabitable. Well, the National Security Council spokesperson said President Donald Trump stands by his plan to rebuild Gaza. Moreover, Israel also rejected Egypt's plan, saying that it failed to address realities, and accused the PA and the UN Agency for Palestinian Refugees, UNRWA, of corruption and support for terrorism. Well, the plan consists of three major stages, including interim measures, reconstruction, and governance. The first stage would last about 6 months. However, the other two phases would take place over a combined 4 to 5 years. And for more on this, we have Akshay Dongre joining us. Well, Akshay, what are the key points of US President Donald Trump's ultimatum to Hamas, and how does this all relate to the ongoing ceasefire discussions in Gaza?
Well, this seems like the Donald Trump administration is not taking any chances as far as the winding up of this particular conflict is concerned. Now, the statement that has come from Donald Trump is significant. Now, this time, Donald Trump has given an ultimatum that the entire Gaza Strip or the entire Hamas leadership, as far as the conflict is concerned, is going to be devastated as far as resumption of any hostilities are concerned, and they would in case the hostages are not returned. And this is coming after the Israeli authorities have announced that about 35 hostages that are in the custody that were with Hamas in Gaza are dead. So there are about 35 dead bodies of the hostages that are held inside Gaza. Besides the dead bodies of 35 hostages, there are 24 hostages that are alive as well. So clearly that is an ultimatum coming in from the US government, from the US president himself, that if the hostages are not returned at the moment, right now, is the word that has been used by the message that has been sent on the Truth Social app by Donald Trump, then they will be held to pay as far as Gaza is concerned. Also, Donald Trump has said that the Hamas leadership has to, in fact, return the dead bodies of all the hostages who have, in fact, died in the custody of Hamas. Stating that only sick people, keep bodies of any kind of hostages or prisoners of wars, and he has also called the Hamas leadership sick as far as this decision of keeping the bodies are concerned. Also, he has asked the Hamas leadership to evacuate Gaza and move to other countries that still can provide any kind of safe haven to the leadership of Hamas. However, clearly one thing has been stated that return the hostages now, or take accountability of everything that is to follow as far as inaction by the US and Israeli forces are concerned, and also giving an ultimatum to Hamas that anything that Israel needs as far as wiping out the entire Hamas leadership will be provided by the US government if the hostages are not returned. And now let's go across to North India's Uttarakhand, where Prime Minister Narendra Modi performing rituals at the winter seat of Ma Ganga in Mukhwa. In fact, Prime Minister Narendra Modi will perform puja and darshan at the winter seat of Ma Ganga in Mukhwa today. Prime Minister Narendra Modi will be performing rituals at the winter seat of Ma Ganga in Mukhwa. Astinada Pramodram Sram Devi Mupabe, Sramamadi Dustam Kam Sosmitam Hinnaprakaram, Madram Julanti Utrapatam Sravendi, Padme Sitam Padvarnam Tam Hopayam Srim व्याशीदन्तरिक्षगुं शिष्णोदुः शवमृततः विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारश्चो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु कुलगंगा मैया की जय। पापापहार दुर्कारी तरंगधारी श्रीमहेन्द्रो बृहस्पतिः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारश्चो अरिष्टनेमिः। शेखराय किल्लदी सोणादि संसेविता देया पाप विनाशनी मकर कुमावातामावाजात वेदो लक्ष्मी मनवगामिनी यस्याम विंदेयाम गाम संपुर्गानम असपूर्वामृतमद्याम हस्तिनाद प्रमोदनम श्रम देवी मुपभे श्रीमामदे दुस्ताम काम सोस्मिताम हिन्न प्रकारम मात्राम ज्वलंति उत्रपताम सर्वेंति पद्मे सिताम पद्मन्नाम ताम होपय्यम श्रीम माता
व्यासीदन्तरिक्षपुंशिष्णोदुः शवमृततः मुखां विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारश्चो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु कुलगंगा मैया की जय। पापापहार दुर्गारि तरंगारि श्रीमालिंगो बृहस्पतिः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारश्चो अरिष्टनेमिः। शेखराय किल्लदी सोणादि संसेविता देया पाप विनाशनी मकर कुमावातामावाजात वेदो लक्ष्मी मनवगामिनी यस्याम विन्देयाम गाम संपुर्गानाम असपूर्वामृतमध्याम हस्तिनाद प्रमोदनम श्रम देवी मुपभे श्रीमामदे दुस्ताम काम सोस्मृताम भिन्न प्रकाराम मात्राम ज्वलन्ति उत्तरपताम सर्वेन्ति पद्मे सिताम पद्मन्नाम ताम होपय्यम श्रीम व्यासीदन्तरिक्षपुंशिष्णोदुः शवमृततः मुखां विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारश्चो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु कुलगंगा मैया की जय। पापापहार दुर्गारि तरंगारि श्रीमालिंगो बृहस्पतिः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारश्चो अरिष्टनेमिः। शेखराय किल्लदी सोणादि संसेविता देया पाप विनाशनी मकर कुमावातामावाजात वेदो लक्ष्मी मनवगामिनी यस्याम विन्देयाम गाम संपुर्गानाम असपूर्वामृतमध्याम हस्तिनाद प्रमोदनम श्रम देवी मुपभे श्रीमामदे दुस्ताम काम सोस्मृताम भिन्न प्रकाराम मात्राम ज्वलन्ति उत्तरपताम सर्वेन्ति पद्मे सिताम पद्मन्नाम ताम होपय्यम श्रीम व्यासीदन्तरिक्षपुंशिष्णोदुः शवमृततः मुखां विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारश्चो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु कुलगंगा मैया की जय। पापापहार दुर्गारि तरंगारि श्रीमालिंगो बृहस्पतिः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारश्चो अरिष्टनेमिः। शेखराय किल्लदी सोणादि संसेविता देया पाप विनाशनी मकर कुमावातामावाजात वेदो लक्ष्मी मनवगामिनी यस्याम विन्देयाम गाम संपुर्गानाम असपूर्वामृतमध्याम हस्तिनाद प्रमोदनम श्रम देवी मुपभे श्रीमामदे दुस्ताम काम सोस्मृताम भिन्न प्रकाराम मात्राम ज्वलन्ति उत्तरपताम सर्वेन्ति पद्मे सिताम पद्मन्नाम ताम होपय्यम श्रीम व्यासीदन्तरिक्षपुंशिष्णोदुः शवमृततः मुखां विश्ववेदाः
स्वस्ति नस्तारश्चो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु कुल गंगा मैया की जय पापापहार दुर्कारी तरंगकारी स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारश्चो अरिष्टनेमिः शेखराय किल्लदी सोणादि संसेविता देया पाप विनाशनी मकर महावातामावाजात वेदो लक्ष्मी मनवगामिनी यस्याम विंदेयाम गाम संपुर्गानम असपूर्वाम रथमध्याम हस्तिनाद प्रमोदनम श्रम देवी मुपभे श्रीमाम देवुस्ताम काम सोस्मिताम भिन्न प्रकाराम माताम ज्वलंति पुत्रपताम सर्वेन्ति पद्मे सिताम पद्मन्नाम ताम होपय्यम श्रीम व्याशीदन्तरिक्षपुंशिष्णोदुः शवमृततः विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारश्चो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु कुल गंगा मैया की जय पापापहार दुर्कारी तरंगकारी स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारश्चो अरिष्टनेमिः Prime Minister Narendra Modi up on your screens performing rituals at the winter seat of Ma Ganga in Mukhwa. Mukhwa is actually a small village located in the Indian state of Uttarakhand. It's situated in the Uttarkashi district, and the village is home to several ancient temples, including the Mukhi Mat temple, which is dedicated to Ma Ganga. It's an important pilgrimage site for Hindus, and it attracts a large number of devotees every year. In fact, the temple is known for its beautiful architecture and intricate carvings, and considered as one of the oldest and most important temple in this region. In fact, to tell you, Mukhwa is also a popular spot for adventure activities like trekking, rock climbing and other outdoor activities, and the surrounding area there offers many trekking options, and the village is a popular starting point for treks to Kedarnath, Gangotri and Yamunotri. Mukhwa can also be reached in bus or taxi from Rishikesh, and Mukhwa is also known as Mukhwa. During the winter season, on the day of Diwali, actually, the idol of goddess Ganga, which is located in the famous Gangotri temple, is moved to Mukhi Mat temple in Mukhwa for the winters. This is done as the Gangotri temple closes down due to heavy snowfall and low temperatures, and during the winters, Ma Ganga's idol is brought here. And for 6 months, the idol of Ganga is worshipped at the Mukhi Mat temple under the Gangotri temple until the Gangotri temple reopens in the summer. And the idol is then taken back to Gangotri temple in a grand procession with much celebration. Prime Minister Narendra Modi performing rituals at the winter seat of Ma Ganga in Mukhwa, which is a small village located in the Indian state of Uttarakhand and is situated in the Uttarkashi district. In fact, to tell you, the village is home to several ancient temples, including the Mukhi Mat temple, which is dedicated to Ma Ganga, and it's an important pilgrimage site for the Hindus, and it attracts a large number of devotees every year.
In fact, later, Prime Minister Modi will also flag off a trek and bike rally as well as address the gathering at a public function in Harsal during his day-long visit to the Himalayan state of Uttarakhand. And Prime Minister Modi's visit is aimed at boosting tourism and local economy in Uttarakhand. Also, the Uttarakhand government has initiated a winter tourism program this year. The program is aimed to promote religious tourism and boost the local economy, homestays, tourism businesses, and among others. Thousands of devotees have already visited the winter seats of Gangotri, Yamunotri, Kedarnath and Badrinath. And earlier, Prime Minister Modi in a social media post said that the government is committed to further strengthen the economy of the state by promoting tourism in Devbhoomi of Uttarakhand. We may tell you again, Mukhwa Temple is famous worldwide for its spiritual significance and amazing, pristine beauty. Mukhba, where Prime Minister Modi is offering his prayers right now, is a small village located in the Indian state of Uttarakhand, and it's situated in the Uttarkashi district. The village is known for its natural beauty, pristine scenery, religious significance, and it's often visited by pilgrimage and trekkers. It is located on the banks of the sacred Bhagirathi River and surrounded by beautiful natural scenery. It is also a great place to explore the local culture, customs and traditions. This village is home to several ancient temples, including the Mukhi Math temple, which is dedicated to Ma Ganga, and it is an important pilgrimage site for Hindus, and it attracts a large number of devotees every year. This temple is also known for its beautiful architecture and intricate carvings, and considered as one of the oldest and most important temples in the region. We may also tell you that Mukhba is also a popular spot for adventure activities like trekking, rock climbing and other outdoor activities. And the surrounding area offers many trekking options, and the village is a popular starting point also for trekkers to Kedarnath, Gangotri and Yamunotri. During the winter season, on the day of Diwali, actually the idol of goddess Ganga, which is located in the famous Gangotri temple, is moved to Mukhi Math temple in Mukhba, and this is done as the Gangotri temple closes down due to heavy snowfall and low temperatures in winters and is reopened in summers. For 6 months, the idol of Ganga is worshipped at the Mukhi Math temple until the Gangotri temple reopens again in the summers. And the idol is then taken back to Gangotri temple in a grand procession with much celebration. In fact, there are several places near Mukhba village in Uttarakhand, and these are the places you can visit near Mukhba village. Prime Minister Narendra Modi up on your screens. He is performing rituals at the winter seat of Ma Ganga in Mukhba. Mukhba is a small village located in the Indian state of Uttarakhand, and it's situated in the Uttarkashi district. Prime Minister right now in Mukhi Math temple. The village is home to several ancient temples, including this temple, which is one of the most important and is dedicated to Ma Ganga. It is an important pilgrimage site for the Hindus, and it attracts a large number of devotees every year. Prime Minister is in Uttarakhand, and later today he will flag off a trek and bike rally as well as address the gathering at a public function in Harsal during his day-long visit to the Himalayan state of Uttarakhand today. And Prime Minister Modi's visit is aimed especially at boosting tourism and local economy in Uttarakhand.
असपूर्वामृतमध्याम आस्तिनाद प्रमोदनम श्रम देवी रूपभे मामदे दुस्ताम काम सोस्मिताम भिन्न प्रकारम. In fact, Prime Minister's visit will also help in making the state's Sheetkal Yatra famous in the country and abroad and give a boost to the state's economy. In fact, expressing his excitement about the visit, the Prime Minister described Mukba as a place of spiritual significance and breathtaking beauty, highlighting its role in preserving India's heritage while fostering development. Prime Minister said, and I quote, "I am eager to visit the winter abode of Ma Ganga in Mukba, a site renowned worldwide for its sacredness and scenic beauty, and it stands as a shining example of our commitment to heritage and progress," unquote. In fact, Prime Minister Modi has also welcomed the Uttarakhand government's winter tourism initiative aimed at promoting religious tourism while creating economic opportunities for local businesses and homestays simultaneously. Prime Minister Modi had said, and I quote, "The double-engine government of Uttarakhand has launched a special program this year to boost winter tourism. This initiative is not only encouraging religious tourism but also helping local businesses, including homestays, thrive," unquote. In fact, under the winter tourism program started by the Uttarakhand government, thousands of devotees have already visited the winter seats of Gangotri, Yamunotri, Kedarnath and Badrinath. Prime Minister Narendra Modi reiterated his government's commitment to boosting Uttarakhand's economy through tourism ahead of his scheduled visit to Mukba Devi temple earlier, and right now is performing puja and taking darshan at the winter seat of Ma Ganga in Mukba. Later, Prime Minister Modi will also flag off a trek and bike rally as well as address the gathering at a public function in Harsil during his day-long visit to the Himalayan state. Prime Minister Modi right at Mukba village, looking at the pristine beauty of the scenic village Mukba. Mukba, as we told you, is a popular spot for adventure activities like trekking, rock climbing and other outdoor activities also, and it is a beautiful village known also for its trekking options. The village is located on the banks of sacred Bhagirathi River and surrounded by beautiful natural scenery, which the Prime Minister is taking a look at right now. It's a great place to explore the local culture, customs and traditions. Mukba village is known for its natural beauty, religious significance, and has a lot of significance among the locals and is often visited by pilgrimage and trekkers. Prime Minister Modi right now in Mukba village, a small village located in the Indian state of Uttarakhand, and it's situated in the Uttarkashi district. Mukba village is known for its natural beauty and pristine location, and its religious significance is also very important, and it is often visited by trekkers and pilgrimage. In fact, the village is home to several ancient temples, including the Mukhimat temple, where Prime Minister is right now, and which is dedicated to Ma Ganga, and it's an important pilgrimage site for the Hindus, and it attracts a large number of devotees every year. Surrounded by majestic mountains, Mukba is a beautiful scenic village known for its natural beauty, religious significance
and it's often visited by trekkers and pilgrimage together. The temple, Mukhi Math Temple, is known for its beautiful architecture and intricate carvings and considered as one of the oldest and most important temples in that region. Owing to its location, Mukhba is also a popular spot for adventure activities like trekking, rock climbing and other outdoor activities. And the surrounding areas offers many trekking options, and the village is a popular starting point for treks to the temples of Kedarnath, Gangotri and Yamunotri. Mukhba is a small village located in the Indian state of Uttarakhand, and it is situated in the Uttarkashi district. Prime Minister Narendra Modi for a day visit to Uttarakhand, and right now in the Mukhi Math Temple offering prayers to Ma Ganga, and right now taking a look at the majestic Himalayas. Mukhba village is known for its scenic beauty, natural beauty and pristine atmosphere there, and it's often visited by pilgrimage and trekkers. It is an absolutely stunning location, and it is located on the banks of the sacred Bhagirathi River and surrounded by beautiful natural scenery. It's a great place to explore the local culture, customs and traditions. Prime Minister Modi's visit will actually give a boost to Uttarakhand's government's winter tourism initiative aimed at promoting religious tourism while creating economic opportunities for local businesses and homestays there. Later, Prime Minister Modi will also flag off a trek and bike rally as well as address a public gathering at a function in Harsal during his day-long visit to the Himalayan state. And especially, Prime Minister Modi's visit is aimed at boosting tourism and local economy in Uttarakhand. In fact, we may tell you again that the Uttarakhand government has initiated a winter tourism program this year, and the program is aimed to promote religious tourism and boost the local economy, homestays, tourism businesses, among others. Also, thousands of devotees have already visited the winter seats of Gangotri, Yamunotri, Kedarnath and Badrinath, which has already given a lot of boost to tourism and economy in the state. In fact, earlier Prime Minister Modi in a social media post said that the government is committed to further strengthen the economy of the state by promoting tourism in Devbhoomi, Uttarakhand. Mukhba Temple is famous worldwide for its spiritual significance and amazing beauty. And the village is home to several ancient temples also, including the Mukhi Math Temple. Prime Minister Narendra Modi performed rituals at the winter seat of Ma Ganga in Mukhba, and after the rituals he is now having a look at the majestic Himalayas and the pristine beauty of the village. Mukhba is a small village located in the Indian state of Uttarakhand, and it is situated in the Uttarkashi district. And the locals there performing
right now to welcome the Prime Minister there in the village. Prime Minister Narendra Modi among the locals, witnessing the performances by the locals. Prime Minister Narendra Modi in Mukhwa village after performing puja, and among the locals right now who are welcoming their beloved leader. People all excited to have a glimpse of their beloved leader in the state to promote tourism and offer prayers to Ma Ganga. In fact, Prime Minister's visit to the state comes ahead of the start of the Char Dham Yatra this May, when Kedarnath and Badrinath Dhams will open along with Gangotri and Yamunotri, and Mukhwa is located on the banks of river Bhagirathi.
In fact, last year, a record 50 lakh pilgrims visited the Char Dhams, and the government expects bigger numbers in 2025 amid the tourism promotion. In fact, Prime Minister said in a statement a day before, and I quote, "I'm very excited to visit the winter residence of the pure Mother Ganga in Mukhba. This holy place is famous all over the world for its spiritual significance and amazing beauty. And not only this, but it is also a unique example of our resolve of heritage as well as development," unquote. Also, a day ahead of the Prime Minister's visit, the Union Cabinet had also approved mega projects to build a ropeway to Kedarnath and the Hemkund Sahib shrines in the region, and a first ever rail link to the Char Dham pilgrimage is also fast taking shape from Rishikesh to Karnaprayag, and it is on the fast construction mode for completion. In fact, the Uttarakhand government also said that the arrival of Prime Minister in the state will boost tourism sector, and the main tourism agency, Garhwal Mandan Development Corporation, is also expecting an increase in the footfall after Prime Minister's visit. Prime Minister Narendra Modi at Mukhba village and performed rituals at the winter seat of Ma Ganga in Mukhba today. And Mukhba is a small village located in the Indian state of Uttarakhand, and it's situated in the Uttarkashi district. In fact, the village is home to several ancient temples, including the Mukhi temple, which is dedicated to Ma Ganga and where the Prime Minister offered prayers. It is an important pilgrimage site for Hindus, and it attracts a large number of devotees every year. The village is known for its natural beauty, religious significance, and it's often visited by the trekkers and a lot of pilgrims. It is located on the banks of sacred Bhagirathi River and surrounded by beautiful natural scenery, majestic Himalayas, and it's a great place to explore the local culture, customs and traditions. And the locals right now welcoming their beloved leader, the Prime Minister. In fact, the village is also home to several ancient temples, and including the Mukhi temple. It is an important pilgrimage site for Hindus, and it attracts a large number of devotees also every year. In fact, the temple is also known for its beautiful architecture and intricate carvings surrounded by spellbound nature, and considered as one of the oldest and most important temple in the region. It offers adventure activities also, like trekking, rock climbing and other outdoor activities. And the surrounding area offers many trekking options also for the tourist, and the village is a popular starting point for treks to Kedarnath, Gangotri and Yamunotri. In fact, to tell you the story behind it, Mukhba is also known as Mukhba during the winter season. On the day of Diwali, the idol of goddess Ganga, which is located in the famous Gangotri temple in the hills of Uttarkashi, is moved to the Mukhi temple in Mukhba. And this is done as the Gangotri temple closes down due to heavy snowfall and low temperatures in the winters. And for 6 months, the idol of Ganga is worshipped at the Mukhi temple, where the Prime Minister is right now, until the Gangotri temple reopens in the summers for darshan. And the idol is then taken back to the Gangotri temple in a grand procession with much celebrations. In fact, there are several places to visit near Mukhba village in the Uttarakhand
state, and the state is promoting this under their tourism scheme. The Uttarakhand government has initiated a winter tourism program this year, and thousands of devotees have already visited the winter seats of Gangotri, Yamunotri, Kedarnath and Badrinath. As during the winters, these temples close down and the winter seats are opened. The program is aimed to promote religious tourism and boost the local economy, homestays there, tourism businesses, among others. Prime Minister reached Uttarakhand and was welcomed at the airport by the Chief Minister Pushkar Singh Dhami and performed puja and darshan at the winter seat of Ganga in Mukba. And later, Prime Minister Modi will also flag off a trek and bike rally as well as address the gathering at a public function in Harsal during his day-long visit to the Himalayan state. And Prime Minister now visiting the exhibition near the temple. He's having a look at the various pictures from the Uttarakhand state, the pictures of the various temples there, explaining the beauty of the area. As we told you, the village is located on the banks of sacred Bhagirathi and is a home to several ancient temples. And the exhibition showcasing that very well. Prime Minister is having a look at the various pictures from the state. Prime Minister Narendra Modi in Mukba right now after the prayers. He had a look at the scenic beauty and now he is at the exhibition having a look at the various pictures from the state itself. Prime Minister Narendra Modi is also accompanied by the Chief Minister of Uttarakhand, Pushkar Singh Dhami, and having a look at the various places adjoining the area and nearby. In fact, Mukba is a small village located in the Indian state of Uttarakhand and is situated in the Uttarkashi district and is famous for its temples and an important pilgrimage site for Hindus, attracting a lot of devotees every year. The exhibition also showcasing the adventure activities and the adventure sites of the area. Mukba is also a popular spot for adventure activities like trekking, rock climbing and other outdoor activities, and is famous for its beautiful temples and scenic beauty. The nearby places of Mukba village are Gangotri Temple, Gaumukh, the hot water springs and Dodi Tal. Prime Minister Narendra Modi, after performing puja right now, visiting the exhibition and understanding the various places there and having a look at the various pictures explaining the area and showcasing the natural beauty of the area. There are several places, in fact, to visit near the Mukba village in Uttarakhand. Prime Minister is also visiting the various stalls there held by the people,
showcasing the artisans and the local handicrafts also. In fact, the Uttarakhand government has initiated this winter tourism program this year, and this program is aimed to boost the religious tourism and boost the local economy, homestays, tourism businesses, local artisans and handicrafts, among others. Prime Minister Narendra Modi visiting the various stalls to promote local artisans and handicrafts in the state. Prime Minister Narendra Modi in Uttarakhand, where he performed rituals at the winter seat of Ma Ganga in Mukhba, and then visited the exhibition and now visiting the various stalls held by the local artisans and handicrafts. Mukhba is a village home to several ancient temples, and it is an important pilgrimage site for the Hindus as it attracts a large number of devotees every year. Prime Minister Narendra Modi visiting the various stalls, understanding the various handicrafts and the local culture there. In fact, the Uttarakhand government has initiated a winter tourism program this year, and thousands of devotees have already visited the winter seats of Gangotri, Yamunotri, Kedarnath and Badrinath, and the program is aimed to promote religious tourism and boost the local economy, homestays, tourism businesses, handicrafts, local culture, among others. And now Prime Minister Modi flagging off the trek and the bike rally in the state. Prime Minister Narendra Modi himself flagging off the trek and bike rally in the state at a public function in the Himalayan state of Uttarakhand. In fact, Prime Minister Modi in a social media post had earlier also said that the government is committed to further strengthen the economy of the state by promoting tourism in Devbhoomi, Uttarakhand. And for that, he is in the state today. Prime Minister Narendra Modi flagging off the trek and bike rally. And from a little while from now, he will address the gathering at a public function in Harsal during his day-long visit to the state today. Prime Minister's visit is aimed at boosting tourism and local economy in Uttarakhand. Little while back, Prime Minister Narendra Modi performed rituals at the winter seat of Ma Ganga in Mukhba, which is a small village located in the Indian state of Uttarakhand and is situated in the Uttarkashi district. He performed puja at the Mukhimat temple, which is dedicated to Ma Ganga and is an important pilgrimage site for Hindus, and it attracts a large number of devotees every year. And right now, Prime Minister Modi is flagging off a trek and bike rally, and later will address the gathering at a public function in Harsal during the day. We may tell you, Prime Minister's visit is aimed at boosting tourism and local economy in Uttarakhand. And Uttarakhand government has initiated a winter tourism program this year.
The program is aimed to boost the local culture, religious tourism, local economy, homestays, tourism businesses, local handicrafts, among others. In fact, Mukhba is a pristine village, a popular spot, and is a home to several ancient temples, including the Mukhi Math temple, where Prime Minister little while back performed puja dedicated to Ma Ganga. And it is an important pilgrimage site for Hindus, and it attracts a large number of devotees every year. Mukhba village is known for its natural beauty, majestic mountains, religious significance, and is often visited by pilgrims and trekkers. भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो भारत माँ के उद्घोष के साथ Prime Minister Modi visiting Uttarakhand today, the Mukhba village, offered prayers to Ma Ganga and now flagging off the bike rally. Prime Minister Narendra Modi is actually on a brief visit to Uttarakhand, and during his visit he offered prayers to Mukhba, Ma Ganga, and flagging off a bike rally night now. He will also open two important trek routes that have been closed since the 1962 Indo-China War. Prime Minister Modi is also set to address a public rally in Harshil before heading back to Delhi, and this is the second visit to the state this year. At the Mukhba temple in Uttarkashi near the Gangotri shrine, in fact, one can have a darshan of Ma Ganga in a winter abode and a magical view of the Himalayas. This was Prime Minister's first visit to the historic temple as the Prime Minister ahead of the start of the 2025 Char Dham Yatra. And the idol of Ma Ganga is moved to the Mukhba temple in winter from the Gangotri temple, which gets covered by snow in the winters. And before the Char Dham Yatra begins in May, the idol will make its way back to the Gangotri temple in a grand procession. In fact, Prime Minister's visit to the village comes ahead of the start of the Char Dham Yatra this May, when Kedarnath and Badrinath Dhams will open along with Gangotri and Yamunotri. And Mukhba is actually located on the banks of the river Bhagirathi. We may tell you that last year a record 50 lakh pilgrims visited the Char Dhams, and the government expects bigger numbers in 2025. In fact, Prime Minister said in a statement before, and I quote, "I'm very excited to visit the winter residence of the pure Mother Ganga in Mukhba. This holy place is famous all over the world for its spiritual significance and amazing beauty. Not only this, but it is also a unique example of our resolve of heritage as well as development," unquote. In fact, today, ahead of the Prime Minister's visit to the state, the Union Cabinet also approved mega projects to build a ropeway to Kedarnath and Hemkund Sahib.
shrines in the region. ये उत्साह वाकई देखते ही बनता है। तो चलिए, अतिथि देवो भव की परंपरा का अनुसरण करते हुए मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी से अनुरोध करूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का वे स्वागत करेंगे। हमारा जो स्थानीय मफलर अंगवस्त्र है वो भेंट करके और साथ ही मां गंगा की शीतकालीन पड़ाव की प्रतिकीर्ति भेंट करते हुए। अब आपकी जोरदार तालियों के साथ में स्वागत कीजिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत संबोधन के लिए। भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान हमारे प्रेरणापुंज और विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, राज्यसभा के सांसद आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, कैबिनेट के मेरे सहयोगी आदरणीय सतपाल महाराज जी, क्षेत्रीय सांसद श्रीमती राज्य लक्ष्मी शाह जी, क्षेत्रीय विधायक श्रीमान सुरेश चौहान जी एवं जनसभा में उपस्थित सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, सभी मेरे नौजवान साथियों, सर्वप्रथम मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मां गंगा के मायके मुखवा एवं सीमांत क्षेत्र हर्सिल घाटी में आने पर समस्त प्रदेशवासियों की ओर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, भारत के इतिहास में आप ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिनके पुण्य कदम उत्तराखंड के इस उच्च पर्वतीय सीमावर्ती क्षेत्र पर पड़े हैं। प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत इस क्षेत्र में आपके आगमन पर आज प्रदेश के प्रत्येक नागरिक का हृदय प्रफुल्लित है। यह हमारा सौभाग्य है कि उत्तराखंड के चहुमुखी विकास के साथ साथ यहाँ की आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने में हमें सदैव आपका मार्गदर्शन एवं सहयोग प्राप्त होता रहा है। उत्तराखंड के प्रति आपके असीम अनुराग और अनन्य स्नेह का ही परिणाम है कि आपके स्वर्णिम पग जब जब देवभूमि की धरती पर पड़े हैं तब तब हमें उसका लाभ प्राप्त हुआ है। इसी क्रम में आज आपके पधारने से पूरे सीमांत क्षेत्र सहित संपूर्ण उत्तराखंड में पर्यटन को बृहद स्तर पर बढ़ावा मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मुझे जितनी बार भी भेंट करने का शुभ अवसर प्राप्त होता है, मुझे उत्तराखंड के विकास में अपने विकल्प रहित संकल्प को पूर्ण करने के लिए हमेशा एक नई दृष्टि और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। इसी का परिणाम है
कि चाहे उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो या विश्व स्तरीय जी सम्मेलन की बैठकों का आयोजन हो या यूसीसी जैसा कानून लागू करना हो या फिर अभी हाल ही में उत्तराखंड में आयोजित हुए 38वें राष्ट्रीय खेलों का भव्य आयोजन हो, ये सभी अभूतपूर्व एवं ऐतिहासिक कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी से प्राप्त मार्गदर्शन एवं सहयोग से ही सफलतापूर्वक संपन्न हो सके हैं। इतना ही नहीं, उत्तराखंड में जब भी कोई विपदा आई है, आपदा आई है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सदैव उसके निवारण हेतु आगे बढ़कर हमारा साथ दिया है, हमारा उत्साहवर्धन किया है, हमारा मार्गदर्शन किया है। चाहे वो केदारनाथ यात्रा मार्ग पर आई हुई आपदा की घटना हो, जोशीमठ में भूधसाव की घटना हो, सिलक्यारा टनल हादसा हो या फिर अभी हाल ही में चमोली माड़ा गांव के पास हुई हिमस्खलन की घटना हो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सतत सहयोग और मार्गदर्शन का परिणाम है कि हमें इतने बड़े बड़े संकटों से प्रदेश को उबारने में सफलता प्राप्त हो पाई है। आज के इस अवसर पर मैं विशेष रूप से समस्त उत्तराखंड वासियों की ओर से और मैं कहूंगा सभी श्रद्धालुओं और देशवासियों की ओर से भी आपने जो 4081 करोड़ रुपए की लागत से गौरीकुंड, केदारनाथ और 2730 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक का रोपवे निर्माण की सौगात देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। इन दोनों रोपवे परियोजनाओं के पूर्ण हो जाने के पश्चात जो यात्रा अत्यधिक कठिन होती थी, कई दिनों की होती थी, वो यात्रा हेमकुंड की हो या केदारनाथ की हो, दोनों ही यात्रा आसान और सरल हो जाएगी। जो वृद्ध हैं, शारीरिक रूप से कमजोर है, वह भी यात्रा करके पुण्य लाभ को प्राप्त कर पाएंगे। निश्चित रूप से इससे हमारा पर्यटन भी बढ़ेगा। भाइयों बहनों, चार धाम यात्रा हमारे उत्तराखंड की आर्थिकी का एक प्रमुख आधार है। इस यात्रा से होटल व्यवसायियों से लेकर टैक्सी चालक तक और स्थानीय दुकानदारों से लेकर ट्रिप ऑर्गेनाइजर तक यात्रा से जुड़े हुए लाखों लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। शीतकाल में चार धामों के कपाट बंद होने के बाद इन सभी लोगों के व्यवसाय पर गहरा प्रभाव पड़ता है, जिसे देखते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मार्गदर्शन प्राप्त कर हमने इस वर्ष शीतकालीन यात्रा की ऐतिहासिक शुरुआत की है। इसी क्रम में मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से शीतकालीन यात्रा में सम्मिलित होकर हमें आशीर्वाद प्रदान करने का आग्रह किया था, जिसे सहर्ष स्वीकार करते हुए आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं हमारे बीच में उपस्थित हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आगमन से न केवल शीतकालीन यात्रा को बृहद स्तर पर बढ़ावा मिलेगा, बल्कि इस सीमांत क्षेत्र में ट्रैकिंग, माउंटेन बाइकिंग के साथ साथ दूसरी एडवेंचर एक्टिविटीज को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके लिए मैं एक बार पुनः आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हुए मां गंगा से प्रार्थना करता हूं कि उनके कुशल एवं सफल नेतृत्व में देवभूमि उत्तराखंड के साथ साथ संपूर्ण देश इसी प्रकार तेज गति से विकास की राह पर आगे बढ़ता रहे और भारतवर्ष पुनः विश्व गुरु के पद पर आरूढ़ हो। भाइयों बहनों, इस वर्ष हमारे राज्य में कुमाऊं और गढ़वाल के बीच में होने वाली नंदा राज्यात यात्रा जो 2025 में प्रस्तावित है, 12 वर्षों बाद जो यात्रा होती है, उसका आयोजन भी सितंबर से अगस्त के माह में किया जा रहा है। हमारे लिए यह आयोजन भी करना बहुत ही गर्व का पल है। साथ ही 2027 में हरिद्वार में हमारा कुंभ भी प्रस्तावित है। दोनों ही जो बड़े धार्मिक आयोजन है, हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन लेकर उसको भी ऐतिहासिक बनाने का काम करेंगे। इसी आशा और आकांक्षा के साथ इन पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। सदियों बाद भारत को फिर से विश्व में मान दिलाया है, सदियों बाद भारत को फिर से विश्व में मान दिलाया है, एकता और अखंडता का फिर से दीप जलाया है, जिसने अपनी निष्ठा से एक स्वर्णिम भारत बनाया है। मोदी जी के रूप में हमने एक देवदूत को पाया है, मोदी जी के रूप में हमने एक देवदूत को पाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब हम उत्तराखंड के विंटर टूरिज्म
शीतकालीन पर्यटन को लेके एक शॉर्ट फिल्म आपको दिखाने जा रहे हैं। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो शॉर्ट फिल्म दिखाई जाए। देवभूमि उत्तराखंड, जहां प्रकृति अपनी संपूर्ण सुंदरता में समाई है। बर्फ से ढकी चोटियां, हरी भरी बर्फ, कल कल बहती नदियां और आस्था से भरी घाटियां, ये केवल प्रकृति का उपहार ही नहीं, बल्कि रहस्य, रोमांच और संस्कृति का अनूठा संगम भी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का इस देवभूमि के प्रति सदैव एक विशेष लगाव रहा है। यही वजह है कि 4 धाम परियोजना से लेकर योग और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने तक उनके नेतृत्व में उत्तराखंड विकास के नित नए शिखर छू रहा है। बीते 10 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण से लेकर इको टूरिज्म और निवेश, रोजगार, कारोबार तक हर क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ है। मैंने बड़े विश्वास से कहा था कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। उत्तराखंड आज हर मौसम में पर्यटकों का स्वागत करने को पूरी तरह तैयार है। तो आइए उत्तराखंड के विंटर टूरिज्म का हिस्सा बनिए। मां गंगा के शीतकालीन प्रवास, गंगा मंदिर के लिए आइए उत्तरकाशी के मुखी मठ, खरसाली में मां यमुना के शीतकालीन प्रवास, यमुना मंदिर का करिए दर्शन, बाबा केदार के दिव्य दर्शन के लिए सर्दियों में रुद्रप्रयाग के ऊखी मठ में ओंकारेश्वर मंदिर पधारिए। चमोली के पानदुकेश्वर में श्री बद्रीनाथ जी का शीतकालीन प्रवास। 4 धाम से जुड़े इन दिव्य स्थलों का दर्शन आप सर्दियों में कीजिए और दीजिए अपनी आध्यात्मिक चेतना को नई ऊर्जा। अगर आप सर्दियों में एडवेंचर और रास्तों का रोमांच महसूस करना चाहते हैं तो मां गंगा की लहरों पर राफ्टिंग, औली की बर्फीली ढलानों पर स्कीइंग, माउंटेन बाइकिंग या फिर रॉक क्लाइंबिंग, उत्तराखंड में रोमांच आपको हर तरफ मिलेगा। अगर विंटर में आप ध्यान, शांति और आत्मचिंतन की अनुभूति चाहते हैं तो यहाँ के रमणीक और शांत पहाड़ आपको नए अनुभवों से जोड़े। नैनीताल, मसूरी, टिहरी, हर्षिल वैली से लेकर दायरा बुग्याल तक, यहाँ चप्पे चप्पे पर सर्दियों के मौसम के अलग अलग यादगार रंग मिलेंगे। वहीं सर्दियों के मेले, त्योहार और उत्सव राज्य की जीवंत संस्कृति से आपको रूबरू कराएंगे। तो कीजिए खोज कुछ नया, कुछ अलग प्रकृति, परंपरा और प्रगति के इस प्रदेश में। इस देवभूमि का हिस्सा बने और इसकी नैसर्गिक सुंदरता को अपने दिल में बसाएं। उत्तराखंड सर्दियों में भी आपका स्वागत करता है। तो अब समय आ चुका है जिनको सुनने के लिए, जिनके आशीर्वचन के लिए हम सभी लोग यहां पे इकट्ठा हुए हैं। आपकी जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। गंगा मैया की, गंगा मैया की, गंगा मैया की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। उत्तराखंड का म्यारा प्यारा भाई बहनों, आप सभी तय मेरी सेवा सौली नमस्कार।
यहां के ऊर्जावान मुख्यमंत्री मेरे छोटे भाई पुष्कर सिंह धामी जी, केंद्रीय मंत्री श्री अजय टम्टा जी, राज्य के मंत्री सतपाल महाराज जी, संसद में मेरे साथी और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी, संसद में मेरे साथी माला राज्य लक्ष्मी जी, विधायक सुरेश चौहान जी, सभी गणमान्य लोग, भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं माणा गांव में कुछ दिन पहले जो हादसा हुआ है उस पर अपना दुख व्यक्त करता हूं। मैं हादसे में जान गंवाने वाले साथियों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं। संकट की घड़ी में देश के लोगों ने जो एकजुटता दिखाई है उससे पीड़ित परिवारों को बहुत हौसला मिला है। साथियों, उत्तराखंड की ये भूमि, हमारी ये देवभूमि आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत है। 4 धाम और अनंत तीर्थों का आशीर्वाद, जीवनदायिनी मां गंगा का ये शीतकालीन गद्दी स्थल आज एक बार फिर यहां आकर आप सब अपने परिवारजनों से मिलकर मैं धन्य हो गया हूं। मां गंगा की कृपा से ही मुझे दशकों तक उत्तराखंड की सेवा का सौभाग्य मिला है। मैं मानता हूं उन्हीं के आशीर्वाद से मैं काशी तक पहुंचा और अब सांसद के रूप में काशी की सेवा कर रहा हूं। और इसलिए मैंने काशी में कहा भी था, मुझे मां गंगा ने बुलाया है। और कुछ महीने पहले मुझे ये भी अनुभूति हुई कि जैसे मां गंगा ने मुझे अब गोद ले लिया है, ये मां गंगा की ही दुलार है। अपने इस बच्चे के प्रति उनका स्नेह है कि आज मैं उनके मायके मुखवा गांव आया हूं। यहां मुझे मुखी मठ मुखवा में दर्शन पूजन का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। साथियों, आज हर्षिल की इस धरती पर आया हूं तो मैं अपनी दीदी भूलियों के स्नेह को भी याद कर रहा हूं। वो मुझे हर्षिल का राजमा और दूसरे लोकल प्रोडक्ट्स भेजती रहती है। आपके इस लगाव
और उपहार के लिए मैं आपका आभारी हूं। साथियों, कुछ साल पहले जब मैं बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए बाबा के चरणों में गया था, तो बाबा के दर्शन अर्चन के बाद मेरे मुंह से अचानक कुछ भाव प्रकट हुए थे और मैं बोल पड़ा था, ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। वो शब्द मेरे थे, भाव मेरे थे, लेकिन उनके पीछे सामर्थ्य देने की शक्ति स्वयं बाबा केदारनाथ ने दी थी। मैं देख रहा हूं, बाबा केदार के आशीर्वाद से धीरे धीरे वो शब्द, वो भाव सच्चाई में, हकीकत में बदल रहे हैं। ये दशक उत्तराखंड का बन रहा है। यहां उत्तराखंड की प्रगति के लिए नए नए रास्ते खुल रहे हैं। जिन आकांक्षाओं को लेकर उत्तराखंड का जन्म हुआ था, उत्तराखंड के विकास के लिए जो संकल्प हमने लिए थे, नीत नई सफलताओं और नए लक्ष्यों की ओर बढ़ते हुए वो संकल्प आज पूरे हो रहे हैं। इसी दिशा में शीतकालीन पर्यटन एक और बड़ा महत्वपूर्ण बड़ा कदम है। इसके माध्यम से उत्तराखंड के आर्थिक सामर्थ्य को साकार करने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। मैं इस अभिनव प्रयास के लिए धामी जी को, उत्तराखंड सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उत्तराखंड की प्रगति के लिए कामना करता हूं। साथियों, अपने टूरिज्म सेक्टर को डायवर्सिफाई करना, 12 मासी बनाना, 365 दिन, ये उत्तराखंड के लिए बहुत जरूरी है। मैं चाहता हूं कि उत्तराखंड में कोई भी सीजन हो, कोई भी सीजन ऑफ सीजन ना हो, हर सीजन में टूरिज्म ऑन रहे। अब ऑफ नहीं, ऑन का जमाना। अभी पहाड़ों पर पर्यटन सीजन के हिसाब से चलता है। आप सब जानते हैं, मार्च, अप्रैल, मई, जून के महीने में बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं, लेकिन इसके बाद उनकी गिनती बहुत कम हो जाती है। सर्दियों में अधिकतर होटल्स,
रिसोर्ट्स और होम स्टे खाली पड़े रहते हैं। ये असंतुलन उत्तराखंड में साल के एक बड़े हिस्से में आर्थिक सुस्ती ला देता है। इससे पर्यावरण के लिए भी चुनौती पैदा होती है। साथियों, सच्चाई ये है कि अगर देश विदेश के लोग सर्दियों के मौसम में यहां आए तो उन्हें सच्चे अर्थ में देवभूमि की आभा का वास्तविक परिचय मिलेगा। विंटर टूरिज्म में यहां लोगों को ट्रैकिंग, स्कीइंग जैसी एक्टिविटीज का रोमांच सचमुच में रोमांचित कर देगा। धार्मिक यात्रा के लिए भी उत्तराखंड में सर्दियों का समय बेहद खास होता है। कई तीर्थ स्थलों पर इसी समय विशेष अनुष्ठान भी होते हैं। यहां मुखवा गांव में ही देखिए, यहां जो धार्मिक अनुष्ठान किया जाता है वो हमारी प्राचीन और अद्भुत परंपरा का हिस्सा है। इसलिए उत्तराखंड सरकार का 12 मासी पर्यटन का विजन, 365 दिन के पर्यटन का विजन लोगों को दिव्य अनुभूतियों से जुड़ने का अवसर देगा। इससे यहां साल भर उपलब्ध रहने वाले रोजगार के अवसर विकसित होंगे। इसका बड़ा फायदा उत्तराखंड के स्थानीय लोगों को होगा, यहां के युवाओं को होगा। साथियों, उत्तराखंड को विकसित राज्य बनाने के लिए हमारी डबल इंजन सरकार मिलकर काम कर रही है। 4 धाम ऑल वेदर रोड, आधुनिक एक्सप्रेसवे, राज्य में रेलवे, विमान और हेलीकॉप्टर सेवाओं का विस्तार 10 वर्षों में उत्तराखंड में तेजी से विकास हुआ है। अभी कल ही उत्तराखंड के लिए केंद्र सरकार ने बहुत बड़े निर्णय लिए हैं। कल केंद्रीय कैबिनेट ने केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट और हेमकुंड रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। केदारनाथ रोपवे बनने के बाद जो यात्रा 8 से 9 घंटे में पूरी होती है, अब उसे लगभग 30 मिनट में पूरा किया जाएगा। इससे बुजुर्गों, बच्चों, महिलाओं के लिए केदारनाथ यात्रा और सुगम हो जाएगी। इन रोपवे प्रोजेक्ट पर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मैं उत्तराखंड समेत पूरे देश को इन प्रोजेक्ट्स की बधाई देता हूं। साथियों, आज पहाड़ों पर इको लॉग हट्स
कन्वेंशन सेंटर, हेलीपैड इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस भी किया जा रहा है। उत्तराखंड के टिम्मर सैंड महादेव, माणा गांव, जादून गांव में टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर नए सिरे से विकसित हो रहा है। और देशवासियों को पता होगा, शायद नहीं होगा, 1962 में जब चाइना ने भारत पर आक्रमण किया, तभी हमारा जादू गांव को खाली करवा दिया गया था। ये हमारे 2 गांव खाली कर दिए गए थे। 60-70 साल हो गए, लोग भूल गए। हम नहीं भूल सकते। हमने उन 2 गांवों को फिर से बसाने का अभियान चलाया है और बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और इसी का परिणाम है कि उत्तराखंड में पर्यटकों की संख्या इस 1 दशक में तेजी से बढ़ी है। 2014 से पहले 4 धाम यात्रा पर हर साल औसतन 18 लाख यात्री आते थे। अब हर साल लगभग 50 लाख तीर्थ यात्री आने लगे हैं। इस साल के बजट में 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को विकसित करने का प्रावधान किया गया है। इन डेस्टिनेशंस पर होटलों को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दिया जाएगा। इससे पर्यटकों के लिए सुविधाएं बढ़ेगी और स्थानीय रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। साथियों, हमारा प्रयास है उत्तराखंड के बॉर्डर वाले इलाकों को भी पर्यटन का विशेष लाभ मिले। पहले सीमावर्ती गांवों को आखिरी गांव कहा जाता था। हमने ये सोच बदल दी। हमने कहा ये आखिरी गांव नहीं है, ये हमारे प्रथम गांव है। उनके विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम शुरू किया। इस क्षेत्र के भी 10 गांव इस योजना में शामिल किए गए हैं और मुझे बताया गया उस गांव से भी कुछ बंधु आज यहां हमारे सामने मौजूद है। नेलांग और जादून गांव, जिसका मैंने वर्णन किया 62 में क्या हुआ था, फिर से बसाने का काम शुरू किया गया है। आज यहां से जादून के लिए मैंने अभी अभी बाइक रैली को रवाना किया। हमने होम स्टे बनाने वालों को मुद्रा योजना का लाभ देने का ऐलान किया है। उत्तराखंड सरकार भी राज्य में होम स्टे को बढ़ावा देने में जुटी है। जो गांव इतने दशकों तक इंफ्रास्ट्रक्चर से वंचित रहे, वहां नए होम स्टे खुलने से पर्यटन बढ़ रहा है, लोगों की आय बढ़ रही है। साथियों, आज मैं देवभूमि से देश के पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और मध्य भी हर कोने के लोगों से, खासकर युवा पीढ़ी से और मां गंगा के मायके से, इस पवित्र भूमि से देश की नौजवान पीढ़ी को विशेष रूप से आह्वान कर रहा हूं, आग्रह कर रहा हूं। साथियों, सर्दियों में देश के बड़े हिस्से में जब कोहरा होता है, सूर्य देव के दर्शन नहीं होते, तब पहाड़ों पर धूप का आनंद मिल रहा होता है।
ये एक स्पेशल इवेंट बन सकता है। और गढ़वाली में से क्या कहेंगे? घाम तापो पर्यटन। सही है ना? घाम तापो पर्यटन। इसके लिए देश के कोने कोने से लोग उत्तराखंड जरूर आए। खासकर हमारे कॉरपोरेट वर्ल्ड के साथी वे विंटर टूरिज्म का हिस्सा बने। मीटिंग्स करनी हो, कॉन्फ्रेंसेस करनी हो, एग्जीबिशंस करने हो, तो विंटर का समय और देवभूमि, इससे होनहार कोई जगह नहीं हो सकती है। मैं कॉरपोरेट वर्ल्ड के बड़े महानुभावों से भी आग्रह करूंगा, वो अपने बड़े बड़े सेमिनार्स के लिए उत्तराखंड आए, माइस सेक्टर को एक्सप्लोर करें। यहां आकर लोग योग और आयुर्वेद के जरिए रिचार्ज और री एनर्जाइज भी हो सकते हैं। देश की यूनिवर्सिटी, प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेज में मैं उन सब नौजवान साथियों से भी कहूंगा कि स्टूडेंट्स के विंटर ट्रिप के लिए आप उत्तराखंड को पसंद कीजिए। साथियों, हमारे यहां हजारों करोड़ की इकोनॉमी, वेडिंग इकोनॉमी है। शादियों में हजारों करोड़ रुपए का खर्च होता है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है। आपको याद होगा, मैंने देश के लोगों से आग्रह किया था, वेड इन इंडिया, हिंदुस्तान में शादी करो। आजकल लोग दुनिया के देशों में चले जाते हैं। यहां क्या कमी है भाई? पैसे यहां खर्च करो ना। और उत्तराखंड से बढ़िया क्या हो सकता है? मैं चाहूंगा कि सर्दियों में डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए भी उत्तराखंड को देशवासी प्राथमिकता दें। इसी तरह भारत की फिल्म इंडस्ट्री से भी मेरी अपेक्षाएं हैं। उत्तराखंड को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार मिला हुआ है। यहां तेजी के साथ आधुनिक सुविधाएं डेवलप हो रही है। इसलिए सर्दियों के दिनों में फिल्म की शूटिंग के लिए भी उत्तराखंड पूरे भारत का फेवरेट डेस्टिनेशन बन सकता है। साथियों, दुनिया के कई देशों में विंटर टूरिज्म काफी पॉपुलर है। उत्तराखंड में विंटर टूरिज्म को बढ़ावा देने के और इसके लिए हम ऐसे देशों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैं चाहूंगा उत्तराखंड के टूरिज्म सेक्टर से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स, होटल और रिसोर्ट्स, उन देशों की जरूर स्टडी करें। अभी मैं यहां एक छोटी सी प्रदर्शनी लगी है, उसको मैंने देखा, बहुत प्रभावित करने वाला मुझे लगा। जो कल्पना की गई है, जो लोकेशंस तय किए गए हैं, जो आधुनिक रचनाएं खड़ी की जा रही है,
एक एक लोकेशन का एक एक चित्र इतना प्रभावित करने वाला था, जैसे मन कर रहा था मेरी 50 साल पुरानी वो जिंदगी के दिन मैं फिर एक बार यहां आपके बीच आकर के बिताऊं और हर डेस्टिनेशन पे कभी जाने का मौका तलाशूं। इतने बढ़िया बन रहे। मैं उत्तराखंड सरकार से कहूंगा कि जो विदेशों से स्टडी हो और स्टडी से निकले एक्शनेबल पॉइंट्स पर सक्रिय रूप से काम करें। हमारी स्थानीय परंपराओं, म्यूजिक, डांस और कुजीन को बढ़ावा देना होगा। यहां कई हॉट स्प्रिंग्स हैं, सिर्फ बद्रीनाथ जी में ही ऐसा है नहीं है, और भी है। उन क्षेत्रों को वेलनेस स्पा के रूप में भी विकसित किया जा सकता है। शांत और बर्फीले क्षेत्रों में विंटर योगा रिट्रीट का आयोजन किया जा सकता है। मैं सभी बड़े बड़े साधु महात्माओं को, मठ मंदिर के मठाधिपतियों को, सभी योगाचार्यों को, उनसे भी आग्रह करूंगा कि वे साल में एक योगा कैंप अपने शिष्यों का विंटर में उत्तराखंड में लगाएं। विंटर सीजन के लिए स्पेशल वाइल्ड लाइफ सफारी का आकर्षण उत्तराखंड की विशेष पहचान बन सकता है। यानी हमें 360 डिग्री अप्रोच के साथ आगे बढ़ना होगा, हर स्तर पर काम करना होगा। साथियों, सुविधाओं के विकास के अलावा लोगों तक जानकारी पहुंचाना भी उतना ही अहम होता है। इसके लिए मैं देश के युवा कंटेंट क्रिएटर्स, आजकल सोशल मीडिया में बहुत बड़ी संख्या में इन्फ्लुएंसर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, वे अपने यहां बैठे बैठे भी मेरे उत्तराखंड की, मेरी देवभूमि की सेवा कर सकते हैं, वे भी पुण्य कमा सकते हैं। आपने देश के पर्यटन सेक्टर को गति देने में, लोगों तक जानकारी पहुंचाने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। जो भूमिका निभाई है उसका और विस्तार करने की जरूरत है। आप उत्तराखंड की विंटर टूरिज्म की इस मुहिम का भी हिस्सा बनिए और मैं तो चाहूंगा कि उत्तराखंड सरकार एक बड़ी कंपटीशन आयोजित करे। ये जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, वे 5 मिनट की विंटर टूरिज्म की प्रमोशन की फिल्म बनाएं, उनकी कंपटीशन हो और जो अच्छी से अच्छी बनाए उसको बढ़िया से बढ़िया इनाम दिया जाए। देश भर के लोगों को कहा जाए आइए मैदान में, बहुत बड़ा प्रचार प्रसार होना शुरू हो जाएगा। और मुझे विश्वास है जब ऐसी कंपटीशन करेंगे तो नई नई जगहों को एक्सप्लोर करके नई नई फिल्में बनाएंगे, लोगों को बताएंगे। साथियों, मुझे विश्वास है आने वाले वर्षों में हम इस सेक्टर में तेज गति से विकास के साक्षी बनेंगे। एक बार फिर 365 दिन का 12 मासी टूरिज्म अभियान, इसके लिए मैं उत्तराखंड के सभी भाई बहनों को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और राज्य सरकार का अभिनंदन करता हूं। आप सब मेरे साथ बोलिए, गंगा मैया की, गंगा मैया की, गंगा मैया की। बहुत बहुत धन्यवाद।
All right, you were watching live from North India's Uttarakhand, where Prime Minister Narendra Modi performed rituals at the winter seat of Ma Ganga in Mukhwa. It is a small, beautiful village located in the Indian state of Uttarakhand. And after performing the puja, Prime Minister flagged off a trek and bike rally. He was accompanied by Chief Minister Pushkar Singh Dhami, who welcomed the Prime Minister and thanked him profusely for visiting the state and promoting the winter tourism program. Prime Minister Modi, in his address at a public function, first paid his condolences to the affected families during avalanche last week in Mana and Chamoli district. And Prime Minister later said that he was very happy to be there and said that Ma Ganga was like his mother. He said that earlier also he had mentioned that this decade was going to be Uttarakhand's decade and the state was moving towards new developments relentlessly. He said that winter tourism was a big step in assisting the economy of the state, and he said that this will help the state to experience tourism in every season for all the 12 months, and spoke about the religious darshans and adventure sports in winters. He said the locals will be highly benefited with it, and the double-engine government of the state there was working tirelessly for the state's development. He requested the corporates to have their big seminars in the Uttarakhand state, as there was nothing better than Devbhoomi. He also appealed the filmmakers to shoot in the state as it has the most favorable conditions. He urged the wedding planners also to promote the state as the wedding destination. And Prime Minister Modi mentioned about the natural wonders of the state and how they could be used for tourism. He spoke about yoga retreat also and asked the yoga acharyas to have special camps in the state. He mentioned that we need to move with a 360-degree approach in the state and urged the youth and content creators to promote the state by their promotion. He gave several ideas also on how to further promote the state at various platforms through competitions. And the Union Cabinet, headed by Prime Minister Narendra Modi, on Wednesday approved the construction of ropeways at Kedarnath and Hemkund Sahib in Uttarakhand in a move that will significantly cut the travel time to the two popular pilgrimage sites. The ropeway is planned to be developed in a public-private partnership and will be based on the most advanced tri-cable detachable gondola technology with a design capacity of carrying 18,000 passengers per day. The ropeway project will be a boon to the pilgrims visiting Kedarnath, as it would provide an environment-friendly, comfortable and fast connectivity and reduce travel time in one direction from about 8 to 9 hours to about 36 minutes. And the development of ropeway project is a significant step towards fostering balanced socio-economic development, enhancing last-mile connectivity in hilly regions and fostering rapid economic growth. Well, also a delegation from the Japan-India Business Cooperation Committee comprising 17 members and led by its chairman Tatsuo Yasunaga called on Prime Minister Narendra Modi. The delegation included senior leaders from leading Japanese corporate houses across key sectors such as manufacturing, banking, airlines, pharma sector, plant engineering and logistics. The discussions covered key areas including high-quality, low-cost manufacturing in India, expanding manufacturing for global markets with a special focus on Africa, and enhancing human resource development and exchanges. Prime Minister expressed his appreciation for Japanese businesses' expansion plans in India and their steadfast commitment to make in India, make for the world. Prime Minister also highlighted the importance of enhanced cooperation in skill development, which remains a key pillar of India-Japan bilateral ties. And moving on, India's External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar on Wednesday spoke about steps taken by the government for development in Union Territory of Jammu and Kashmir, responding to a question from a member of the audience at the Chatham House in London. Jaishankar said that India is waiting for the return of the stolen part of Kashmir, which is under illegal Pakistani occupation. Well, look, on Kashmir, actually we have done, I think, a good job solving most of it. I think removing Article 370 was step number one. Then restoring growth and economic activity and social justice in Kashmir was step number 2. Holding elections, which were done with a very high turnout, was step number 3. I think the part we are waiting for is the return of the stolen part of Kashmir, which is on the under illegal Pakistani occupation. When that's done, I assure you, Kashmir solved.
Well, as we approach International Women's Day, DD India is celebrating the achievements of women across various fields. Women's health remains a crucial aspect of empowerment, and to shed light on key challenges and solutions, DD India correspondent Kriti Vadhera spoke to a leading gynecologist. Let's listen in. This Women's Day, as we celebrate the inspiring stories of strength of the women, joining us today is Dr. Anjali Taneja, a leading gynecologist. I welcome you, Dr. Taneja, on DD India. First, to begin with, I want to know what was your success mantra of your career? Hard work, consistency, taking challenges head on as they came, and never lose, get up and fight back. So over a period of time, we have seen that there's a lot of awareness in terms of health, if we talk about health amongst women. How do you see this awareness? There's definitely the awareness has increased. The females are much more focused about how they manage themselves during their journey, starting from puberty till menopause and later. Girls are more aware in adolescence. The more number of patients have started coming from cervical cancer vaccination. There is awareness about pap smear. There is awareness about how your period should start. That, like, many patients are getting their periods early, so mothers are concerned about their girls. And then every issues, a lot of pubertal issues or sexual health issues are not rushed below they're not pushed below the doormat anymore. So people have become more open about talking their concerns, and their self-awareness also, courtesy social media. People are now getting access to information more easily. Doctor, you spoke about the positive aspects of this awareness on social media and media. So are there also any negative impacts we talk about, or which women have to take care of? On social media, there are a lot of influencers, a lot of people talking about every domain of health. Probably people who are not qualified enough or who have not done their research enough to say on a particular subject. So every advice should not be accepted blindly. Take it with a pinch of salt. Do your own research. Check with your doctor whom you trust. What would be your key advice to maybe the budding doctors who want to come for this career, maybe pursuing gynecology? So any young girl or boys who want to be gynacs, please remember it's a branch which wants you to work day and night throughout your life. So there is no shortcut to it. It is a demanding branch. You are simultaneously dealing with two lives, and you are dealing with a female who the first contact in India comes largely when the patient is pregnant. So that is an emotional journey for the female, for the family. So you are connected to your patients emotionally, you are connected to them medically. So this was Dr. Anjali Taneja telling us how we can empower ourselves in terms of health. With camera person Mohit Joshi, I am Kriti Vadhera reporting from New Delhi for DD India. Well, personnel from Sri Lanka Navy participated in a yoga session at the Colombo port alongside the crew of Indian naval ship Kutar. Indian naval ship Kutar, a Kukuri-class corvette, is in Colombo port for a 3-day visit. During the visit, the ship has handed over a refilled firefighting system cylinder for Sri Lanka Coast Guard ship Suraksha. India had earlier provided spare parts and similar assistance in 2021, 2022 and 2024. The visit includes professional interactions, joint exercises and sporting events, reinforcing India's neighbourhood first policy and maritime security cooperation under the Sagar vision. All right, that's all for this edition of DD India News Hour. Let us know your thoughts on the news of the day. For those on the go, you can get all the latest news and updates from India and across the world on the DD India mobile app. The app is available on both Android and iOS platforms. Scan the QR code on the screen to download now. Well, we'll be back with more news as it breaks here on DD India. I'm Lipakshi Khurana from all of us here in Delhi. Thanks for watching DD India News Hour.